पिलामाने द मच अवेटेड अवेती ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11 साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारानी सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू आउ पिलामाने एई कोर्स रे आमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो बेसिक टॉपिक सब कवर करबा जहाँकि क्लास 11 साइंस रो पाठ बुझिबारे तुमको बहुत हेल्प करिवो तो आ वेट कौन कर वीडियो तल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अच्छी से क्लिक करके कोर्स पे रजिस्टर करो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास Today we'll start the most important part of your maths, that is calculus. Calculus तमरा सबो physics maths दीटा जिनसा पाई बहुत important. तो calculus को different step रे हमें पढ़िबा. First we'll start with limits, then we'll go to continuity, then we'll go to differentiability, and with differentiability the most important part जोड़ा तुमको प्रति स्टेप रे दरकार हबा that is differentiation. कौन जिनस गुड़ा हमें धीरे धीरे जानिबा. आज रा क्लास रे हमें लिमिट्स और कंटिन्यूटी को ही डिस्कस करिबा. Differentiation and the last one is integration. with differentiation और integration संगरे आउ दीटा जिनस add हुए application of differentiation and application of integration. माने हमें जिनसों को apply को जगह रे करो. तो first हमें limits विषय जानिबा चला. तापरे जिबा कंटिन्यूटी को तापरे धीरे धीरे गोटे गोटे स्टेप हेके जिबा. लिमिट्स कहले हमें बुझू कोन माने नॉर्मल डे टू डे लाइफ रे तमे जतबेले नॉर्मली यूज करा कोन को लिमिट माने गोटे लिमिट रे रुआ. हमें लिमिट्स कोन जानिबा तमे डे टू डे लाइफ रे लिमिट्स कहले कोन गोटे लिमिट रे रुआ माने गोटे बाउंड्री फिक्स करा हो. ओके त लिमिट्स हमें जतबेले कोन लिमिट्स माने मैथमेटिक्स रे लिमिट्स माने कोन माने approach करिबा गोटे जिंस को approaching but not achieving. approach तो करिबा but 100% से जागर जेकी पहुंची परिबानी. फॉर एग्जांपल जदी गोटे फंक्शन अछि हम पाखे fx is equal to x square minus 1 divided by x minus 1. आउ ताहले f of 1 केते हबो? Who can tell me? What will be the value of f of 1? Ma'am, infinity. 0. Yes, this will be 0 minus 1 minus 1 divided by 1 minus 1. तो 0 by 0 form रे हमें को. Okay, let's start then. ता हमें कौन बुझितिलु जदी गोटे फंक्शन अछि हमारा fx is equal to x square minus 1 divided by x minus 1. Okay, ताहले f of 1 जतबे हमें नोचू 1 minus 1 divided by 1 minus 1 तो 0 by 0 फॉर्म रे ये आसी गला. तो ए टाइप रा फंक्शन को कैलकुलेट करिया पई जदी हमें तब हमें कौन लिखि परिबा लिमिट को हमें परे आसबा. चलो अच्छा तब जदी मु कैंसिल कर देली आको फैक्टराइज करके. ओके फैक्टराइज करके मु कैंसिल कर देली कोन हे जिवो ऊपरटा x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. So x minus 1 cancel he gala. So now fx is x plus 1. Okay, so ebe tame fx ro value bahar kari pariba. Now what will be the value of f of 1? 2. This will be 2. अच्छा जदी नाही आम पाखरे जिनसा. ओके हमें एग्जैक्टली 1 जदी डायरेक्ट पुट कलु हमको वैल्यू मिलुनी. बट हमें जदी 1 रो स्लाइट कम की स्लाइट बेसी वैल्यू पुट करिबा. सपोज x is equal to 0.99.
So what will be our fx? Fx will be 1.99. 1.99. Suppose x is equal to 0.999, then fx will be 1.999. Similarly, तमे जेते 9 बढ़ी जिबो एठी धर मु 10 टा 9 भी लिखली fx कोन हबो मोर 1 पॉइंट तापरे सेति की नंबर ऑफ 9s. So exactly हमें 2 पाउनु माने x जेतेबेले 1 आडे प्रोसीड करूची. ओके सेतेबेले fx कहा आडे प्रोसीड करूची 1 आड़े 1 आडे देखो कहा आडे जाउची 1.99 2 1.99 आड़े 2 आडे. Yes, when x is approaching towards 1, then our fx is approaching towards 2. आकु हमें कौन कहू tends to भी कही थाउ. Tends to, when x tends to 1, fx tends to 2. So एटा हमें कौन कहलु 1 रा exactly को साइड नेलु लेफ्ट साइड की राइट साइड राइट साइड ये हम नंबर लाइन हां एठी 1 अछि. ओके 1 अछि मो fx कथा कोनी मो x कथा कहूची 1 रो वैल्यू 1 कोटा x 1 होची ना. सो 0.99 ता तारो लेफ्ट रे आसीबो कि राइट रे आसीबो लेफ्ट साइड रे. सो ए जतबे ए जिंसो को हमें कोन कहि थाउ when x approaching to 1 minus, then fx approaching to 2. और जो f approaching to 1 minus को हमें कहि पारू x tends to 1 minus माने this implies x is approaching to 1 from left hand side. Understood? The 1 minus x approaching 1 minus मुझे साइन देली ता माने कौन हैला माने 1 रू टिके कम. Understood? yes 1 ma'am नुहे exactly 1 नुहे कारण exactly जदी 1 हबो ताहले हमरो 0/0 फॉर्म को आस जिबा इंफिनिटी ही जिबा. किंतु 1 रो जस्ट स्लाइट कम जदी मु नै गली ताहले आस जिबा वैल्यू हमको नियरली इक्वल टू 2 मिलेबा. सो से जो x tends to 1 minus को हमें कहू जदी वर्ड रे लिखि परिबा x is approaching to 1 from left hand side. Okay, up to this point clear? Now let us left hand रो में आसी गलो एबे चलो देखिबा राइट हैंड रो आसीले कोन होची. जदी मोर x रो वैल्यू 1.01 मुनेली what will be fx 2.01. If x is equal to 1.001, fx will be 2.001. If x is equal to 1.0000001, 6 zeros, then fx will be 2.0000001. So ए जगह रे कोन होची जेमती हमें लेफ्ट हैंड नहीं थिलु ये होची राइट हैंड साइड. When x approaches to 1 plus fx is approaching 2. एठी टिके दूर रे थिला एठी आउ टिके पाकु आसिला एठी आउ टिके पाकु आसिला एमती धीरे 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 सेतबे से अप्रोच करी करी आसुची fx कोन होची हमरा धीरे धीरे 2 आडे अप्रोच करके आसुची. सो आकु हमें कोन कहू x is approaching to 1 from right hand side. Understood? कार किसी डाउट जो लेफ्ट
लेफ्ट रू अप्रोच कला राइट रू अप्रोच कला किछि डाउट ओके No, लेट्स ma'am. मूव फॉरवर्ड ए लिमिट को हमें आपको एक्सप्रेस केमती करबा खाली सब बेले तो सब माने नहीं कि हमें एंती हम पाखरे टाइम नहीं हमें 1.01 1.001 एंती वैल्यू पुट करी जिबा सो हमें ता पई किछि फार्मूला किछि सिंबल टाइप रो जिंस यूज कर सो लिमिट आपको जते बेले x अप्रोचिंग 1 fx अप्रोचिंग 2 को तबले हमें लिखो एग्जैक्टली लिमिट ऑफ fx when x tends to 1 minus thila first left hand side thila kete thila ar value this is equal to 2 thila then aa gote asila 1 plus limit of x tends to 1 plus fx tar value kete thila 2 thila so limit konosi function ro limit at that point ko limit of fx x tends to a that means the f of a when x tends to a that means x approaching to a x is approaching to a okay understood ये जो लिमिट लिखिलो ता माने कोन बुझिला मैम आरोटी पूर्व पेज एठी देखु ना तमे मो सांगरे सांगरे लेख कारण ये होची ओके रो गोटे मिनिट असला नहीं हां मैम हेइला हे गला लेखि देला ओके चलो सो ए जो जिंस ये दीटा अलगा जिंस हे गला देखो ये लिमिट ऑफ x approaching to 1 minus fx and limit of x approaching to 1 plus fx equals to 2 तामने एठी हमें जान लो ये लेफ्ट साइड रो अप्रोच करूची आ एठी जान लो ये राइट साइड रो अप्रोच करूची तो हमें ताको कहिबा कोन दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट जते बेले लेफ्ट साइड रो अप्रोच करे ताको हमें कहो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जते बेले राइट साइड रो अप्रोच करूची ताको हमें कहो राइट हैंड लिमिट ओके अंडरस्टूड Yes, ma'am. yes so हमें केते बेले कहिबा गोटे फंक्शन रो लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट कौन जान लो राइट हैंड लिमिट हमें केमती जान लो ओके सो लिमिट एग्जिस्ट्स when limit of x tends to a minus fx equals to limit of x tends to a plus fx माने जते बेले लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हुए देन लिमिट एग्जिस्ट्स हमें कहि थाउ कोनोसी फंक्शन रा फर्दर कैलकुलस फंक्शन कैलकुलस जहां भी हमें करिबा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फर्स्ट जिंस होची लिमिट एग्जिस्ट करिबा जरूरी so this is the first step LHL equals to RHL जदि हबो LHL means left hand limit RHL means right hand limit okay so if LHL equals to RHL then limit exist कले तापरे में further operation करि परिबा now this much is clear ओके सो आमे लिमिट यूज काई करूछु कोन पाई लिमिट करा होची तमे जेमति देखिलो 0/0 फॉर्म रे आसी वाला एग्जैक्टली जते बेले गोटे वैल्यू आमे पाउनु जते बेले तार नेबरहुड रे आमे तार एग्जैक्ट वैल्यू खोजू
माने नहीं कि सबु पॉइंट रे आमे गोटे फंक्शन रो वैल्यू बाहर करि परिबा. There are certain indeterminate forms जोठी आमे वैल्यू से फंक्शन रा बाहर करि परिबा नै. माने जो पॉइंट रे आमे कहि दउ जो फंक्शन डिफाइन करूनी तो सब जगह तो आमे छाड़ी परिबा ना फंक्शन डिफाइन करूनी कोई की. माने जेमती 0/0 फॉर्म हे गला, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हे गला, बा तमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हे गला, 1 टू द पावर इंफिनिटी हे गला. ए सब जगह रे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट 0. माने जेतबेले गोटे नॉट डिफाइंड फंक्शन माइनस नॉट डिफाइंड फंक्शन नोचो ताको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नोचो. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केबे भी कैंसल होएनी कारण इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर. ओके सो ए टाइप रो फॉर्म रे जेतबेले डायरेक्टली गोटे फंक्शन रो वैल्यू काढी पारू हमको से तार अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर करिया को पड़े. इन दैट टाइम वी यूज लिमिट. आ लिमिट केमते हमें चेक करू जो लेफ्ट रो अप्रोच करू छी राइट रो अप्रोच करू छी गोटे जगह रे आसी कि मिसु चंती कि नहीं दैट इज इंपोर्टेंट. लिमिट एग्जिस्ट माने से माने आसी कि गोटे जगह रे मर्ज करू चंती कि नहीं. जदी मर्ज करू चंती लिमिट एग्जिस्ट तो गोटे ए पॉइंट रे धर x इज इक्वल टू a ये लेफ्ट साइड रो एमती अप्रोच होची ये राइट साइड रो एमती अप्रोच होची. ओके एटी x tends to a minus एटी x tends to a plus. so ये गोटे पर्टिकुलर जगह अप्रोच होचंती आसी कि हां अप्रोच करचंती सो ए जगह हमें कहि परिबा एग्जिस्ट करूची. ओके जदी मो गोटे सेपरेट केस नहीं जाए ये लेफ्ट हैंड साइड रो एटू को जाउची. ओके ये राइट हैंड साइड रो एमती तळ आडे आसुची प्लस माइनस वैल्यू आस जाउची कि जा भी हो. सो ए जगह हमें कोन कहबा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके आउ तपरे लिमिट एग्जिस्ट केमती हबो जदी LHL इक्वल्स टू RHL हेतिबा आउ दी जनकर फाइनाइट वैल्यू भी हेतिबा. फाइनाइट वैल्यू प्लस LHL इक्वल्स टू RHL. LHL ले भी फाइनाइट वैल्यू हेतिबा RHL ले भी फाइनाइट वैल्यू हेतिबा आउ दी जण इक्वल हेतिबे ताहाले हमें कहि परिबा से जगह रे लिमिट एग्जिस्ट करूची. क्लियर नाउ मैम Yes. मैम फाइनाइट वैल्यू मींस पाखापाखी वैल्यू हेबो. नहीं फाइनाइट वैल्यू माने जहा को हमें कैलकुलेट कर माने असीमा ससीमा जहा को कहउछ ससीमा वैल्यू को हमें फाइनाइट वैल्यू कहू असीमा को इनफाइनाइट माने जहा को हमें नंबर रे एक्सप्रेस करि परिबा. आज्ञा ओके असीमा जोटा हेले से इनफाइनाइट हे गला माने तमरे जदी ससीमा वैल्यू माने तम गोटे लेखि पारुथबो ताकू आउ इक्वल हेतिबे ताहाले लिमिट एग्जिस्ट करूची. आज्ञा Now let's find out how to calculate left hand limit and right hand limit. Okay हमें LHL केमती काढिबा आउ RHL केमती काढिबा. कोनोसी फंक्शन देची सपोज लिमिट ऑफ fx at x tends to a minus एटा कोन हेगला हमर LHL हेगला a minus अछि RHL कोन हबो limit of fx x tends to a plus. ओके आपको कैलकुलेट केमती करबा जरूरी नहे कि a पके देले हमको मिल जिवो वैल्यू. आमे सी जगह रे कोन करबा a टू टिके कम x केते a टू टिके कम. ओके सो दैट्स व्हाई वी विल टेक x is equal to a minus h. ओके सेठी हमर केते थिला फर्स्ट फंक्शन रे a equals to 1 थिला h हमें केते 0.0000001 भी नहीं करबा. अंडरस्टूड x is equal to a minus h. h ता बहुत छोटो संख्या तो एठी हमें कर देबा h जेतबेले नियरली इक्वल टू 0 माने h tends to 0. सो ए जिंस हमर कोन हे जिबा दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f of x minus h when h tends to 0.
बुझेला a minus h x केते a minus h हे गला लिमिट ऑफ f a minus h x बदले आमे को वैल्यू पुट कलो a minus h वैल्यू पुट कलो h tends to 0 सेमती राइट हैंड साइड रे कोन करबा आमे x रा वैल्यू केते a रु टिके बेसी so x is equal to a plus h okay where h tends to 0 so this will be limit of h tends to 0 एठी आउ x लिखिबनी एठी h लिखा हबो a plus h f of a plus h understood ए प्रोसीजर रे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बाहर करू एठी जे कहार किछि प्रॉब्लम No, ma'am. No, ma'am. ओके नाउ आमी जेंती फंक्शन रा अलजेब्रा फंक्शन पढिलु लिमिट रा भी एग्जैक्टली सेमती फंक्शन लिमिट रा भी एग्जैक्टली ऑपरेशन हमें ये करबा सो वी नो दैट fx और gx दीटा फंक्शन नहीं जिबा हमें fx and gx है ना so let us take limit of fx x tends to a equals to l and limit of gx x tends to a equals to m ako ame algebra of limits kemti kariba jemti karthilu tale limit of x tends to a f plus gx jodi haba plus minus minus ele minus it will be limit of x tends to a f of x plus minus limit of gx x tends to a that means l plus m हमें separate कर परिबा ताकि तमन जदी हमर अछि limit of x tends to a x plus sin x ओके ताले हमें कोन करिबा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x गोटे बाहर करि परिबा प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a sin x गोटे अलगा करि परिबा अंडरस्टूड सेमती माइनस रे भी सेम एग्जैक्टली सेम जिंस अप्लाई हबो नाउ लिमिट ऑफ मैम मैम ब्लैक स्क्रीन हे जायछि आ किछि सुभा भी जाउनी हेलो पिला माने मो ऑडिबल एबे हाँ मैम Yes, ma'am. से एट डिस्कनेक्ट Yes, ma'am. ओके हाँ ऑडिबल पिला माने Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट
ओके लेट्स स्टार्ट आमे कोठी थिलो algebra of limits Good morning. good morning आमे algebra of limits रे थिलो okay आज्ञा मैम। now let's find out how to calculate limit तमे limit कोन जानिला limit केतले exist होची जानिला आ algebra of limit जानिला limit कोठी यूज करिवो जानिला जोठी हमें exact से point रे तार proper value पाइबानी तो तार neighborhood रे हमें point गोटे approximate value नहीं की बाहर करू ओके फर्स्ट जेतबेले किछि असुविधा नाही हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तक हमें कोन कहि थाउ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड माने हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देगी मिली जीरो तारे लिमिट सपोज योर क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तामेठी ये किछि इनडिटरमिनेट टर्म रे अछि कि लेट्स चेक इनडिटरमिनेट माने जो टर्म ता हमें डायरेक्ट काढी परिबानी ये डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करके काढी परिबा सो दिस विल बी हमें x रा वैल्यू डायरेक्ट जो जो जगह रे x अछि सेठी पुट करबा ओके सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 into 1 plus 4 equals to 8 okay so now tell me the value of limit of x tends to 1 x cube plus 8 divided by x plus 2 जल्दी बाहर करी को डायरेक्ट x रा वैल्यू पुट करो x is equal to 1 आओ बाहर करी की को मते वैल्यू मैम 3 मैम 3 this will be 3 1 plus 8 well so direct substitution method is clear now let's move to next method जते बेले हमको एमती डायरेक्ट क्वेश्चन मिलिबनी जते बेले हमको indeterminate value मिलिबा जते बेले हम फर्स्ट क्वेश्चन करथिलु ओके so that in that case certain methods are there first is our factorization method माने जेमती तमे फैक्टराइज करूतला जिंस को सेमती फैक्टराइज करिबाटी ये जो डायरेक्ट जो फैक्टराइजेशन मेथड जनरली तमर पॉलिनोमियल फंक्शन जो अछि सेथरे यूज हो फैक्टराइजेशन मेथड जेतबेले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी पॉलिनोमियल फॉर्म रे थिबा सेतबेले भी यूज होई पाए सो इफ fx limit of fx at x tends to 2 where fx are a value kete where fx is equal to x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 4 so what will do you have to factorize this so our question will be limit of x tends to 2 x square minus 5x plus 6 divided by x square by 4 direct जदि 2 put करिबा ताले तळे कोन 0 आछी ओके ऊपरे भी 0 आछी तो ये को फॉर्म रे रहउची 0 by 0 फॉर्म रे so we cannot solve this directly so हमें factorize करिबा numerator को और denominator को so it will be limit of x tends to 2 ऊपर कोन हे जिबा x minus 2 into x minus 3 आउ तळेटा कोन हबा x plus 2 into x minus 2 so x minus 2 कोन हला कैंसल हे गला तो what is left limit of x tends to 2 x minus 3 divided by x plus 2 now we'll use direct substitution method आमे ताको नै आसीबा पूरा प्रॉपर जागा को तापरे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन
यूज करिबा so it will be 2 minus 3 divided by 2 plus 2 so minus 1 by 4 is the answer. This method is clear. Now solve a question. Jaldi mate koi ke answer ko. Question is limit of x tends to 3 x square minus 4x plus 3 first check kara ye ko form re achi then x square minus 2x minus 3. Do it jaldi do it fast. मैम 0/0 0 by 0 form रे अछि ओके तो हमें कोन करिबा एठी फैक्टराइजेशन करिबा x tends to 3 ऊपर कोन हे जिबा x minus 3 into x minus 1 ताळे कोन हे जिबा x minus 3 into x plus 1 x minus 3 cancel हे गला तापरे कोन करिबा हमें रहिला कोन x minus 1 divided by x plus 1 then direct substitution method 3 minus 1 divided by 3 plus 1 this is 2 by 4 or you can say 1 by 2. Now second method is also clear.